So this is the authorization object. If you want to see some more place like VA01, you know, VA01, Mm-hmm. 3, right? SC90, SC90. or direct SAP screen open over SC93. So VA01, okay. So let's display it. Here there is no authorization object for sales order. Okay. Suppose ME21N. See here authorization object for परचेज ऑर्डर मतलब क्रिएशन। ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, समझा नहीं मैं। ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, ये ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, या तो स्टैंडर्ड रहता है। हम्म। तो ये अगर ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट आपको पीएफसीजी में असाइन है, आपके यूजर में असाइन है, तो ही आप एक्सेस कर सकते हो। आपको मैं बताता हूँ ओके, SU01 एक्सेस होगा क्या। मतलब ये क्या है क्या M_बेस्ट जो वो था, कोई सीडीएस ऑथराइजेशन है क्या उसके ऑब्जेक्ट, ऊपर? नहीं नहीं नहीं, सीरियस व्यू नहीं है वो, हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे सीरियस व्यू में। ये जो पीएफसीजी है, पहले एसएपी एबाफ में और एसएपी में ईसीसी में और जो भी है, उसमें हम लोग हम्म ऑथराइजेशन ये ऑथराइजेशन स्टैंडर्ड रहता है, और कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम्म। असाइन करते हैं। ओके। प्रोडक्शन में क्या होता है, सब कुछ ओपन नहीं रहता है। सेल्स ऑर्डर का ऑथराइजेशन ओनली सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने वाले के पास ही रह सकता है। तो हम्म। उसको हम लोग करने के लिए ये ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जाता है। और एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी चेंज करने वाला है, क्रिएट करने वाला, तो असाइन किया जाता है, तब जाके उसको VA01 का एक्सेस होता है। जैसे अभी हमको पीएफसीजी ओके। का एक्सेस चाहिए, राइट। हम्म पीएफसीजी का एक्सेस दिख रहा है हमको। हम्म। अभी मैं ओपन करूं पीएफसीजी, क्या एरर आता है, यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज दिस ट्रांजेक्शन, करेक्ट। अच्छा, आप ऑथराइज, अच्छा आपके में नहीं। हम्म। नहीं है हमको ऑथराइज। SU53 में जाओगे आप। ओके, ये देखो, आपको ऑथराइजेशन चेक, यस टी कोड, ये ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट है, हम्म। यस टी, और इस फील्ड का नाम है एसटी। PCB। ओके, हम्म यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज PFCG। अब दिस ऑब्जेक्ट को मेरे यूजर आईडी में जब मैं असाइन करूंगा, राइट, तो मुझे ये एक्सेस मिल जाएगा। ओके। PFCG का ये एक्सेस नहीं है, SU01 का ये एक्सेस नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वही हम्म। टी कोड है, PFCG टी कोड है, और SU01 ही टी कोड है आपको ये ऑब्जेक्ट और फील्ड असाइन करने के लिए। हम्म। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सिक्योरिटी टीम को बोलूंगा, सिक्योरिटी टीम विल डू दिस असाइनमेंट, then only we can हम्म। have the access. So likewise, हाँ, this हमने sales भी ऐसे ही order, कराया था ना। हाँ, अभी मैं ये सेल्स ऑर्डर को मैं ओपन कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स हम्म ये ऑब्जेक्ट मुझे असाइन है मेरे यूजर। ओके। ऑब्जेक्ट मुझे असाइन है, ये भी ऑब्जेक्ट असाइन है, ये भी ऑब्जेक्ट असाइन है, ये भी ऑब्जेक्ट असाइन है, सब असाइन है। दैट्स व्हाई हम्म। आई कैन एबल टू यूज दिस CDS view। ओके, अगर ये असाइन नहीं होता, तो मैं VA01 टी कोड अगर रन करता, VA02 टी कोड रन करता, तो एक्सेस नहीं होता मुझे। देखो VA02 का एक्सेस नहीं है, या एग्जाम्पल दिख रहा हम्म। है। VA02 का मुझे एक्सेस क्यों नहीं है, क्योंकि हमको शायद 02 का एक्सेस नहीं होगा। जो एक्टिविटी होता है ना, एक्टिविटी 03 असाइन हुआ होगा, 02 असाइन नहीं हुआ होगा, इसलिए एक्सेस नहीं। अब ओके। VA01 एक्सेस है, ये भी नहीं, तो ओनली डिस्प्ले एक्सेस है। ओके, हम्म। आई हैव ओनली डिस्प्ले एक्सेस।
तो अभी मैं यहाँ पे कुछ अभी ऐसा सीडीएस व्यू तो ऐसा है नहीं, व्यू है तो वो डिस्प्ले ही देता है एक्सेस। ओके। लेकिन अगर कोई सीडीएस व्यू 01 है, 02 है, और उसको हम लोग ओ डाटा सर्विस में एनेबल कर रहे हैं, तो ही हम लोग उस पे कर्ड ऑपरेशन कर सकते हैं, क्रिएट अपडेट डिलीट। 01, 02, ओके। 03 का एक्सेस होगा तो ही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। हम्म। कोई भी सीडीएस व्यू पहले क्रिएट करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे ओ डाटा सर्विस के लिए। अब वो डाटा सर्विस के लिए एक्सेस तो हम लोग को एक्सेस देना होगा, तो उसमें हम लोग 01, हम्म। 02 फिर जब हम लोग एक्सेस देंगे तो वो यूज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। अच्छा, 03 एक्सेस पे। हाँ, एक्टिविटी 03 एक्टिविटी 03 मीन्स। एक्टिविटी हाँ 03 पे ही, मतलब 03 में पूरा एक्सेस है। 03 एक्टिविटी है, डिस्प्ले एक्सेस, ओनली डिस्प्ले कर ओके। सकते हैं। ये सीडीएस व्यू इटसेल्फ डिस्प्ले के लिए है, क्रिएट के लिए नहीं है। हम्म। ये ऑर्डर सर्विस को अगर हम लोग ये ऑर्डर सर्विस को एक्सपोज किया हुआ कंजम्पशन में, तो कंजम्पशन में कुछ रिपोर्ट डिस्प्ले करने के लिए हुआ, क्रिएट करने के लिए नहीं हुआ है। अच्छा। दिस सीडीएस व्यू इज यूज फॉर टू डिस्प्ले a डिस्प्ले। report, historically report consumption view, right? So it is not used हम्म। to do some operation like CRD operation. उसके लिए आपको ऐसे उसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल है रैप, कैपम, अच्छा। वो अलग आरएपी। टेक्नोलॉजी। आरएपी वो अलग है। सीरियस व्यू सिर्फ डिस्प्ले के लिए ही है मोस्ट प्रोबेबली। अब जब रैपम में जाएंगे आप, जब वो एक्सप्लेन करूंगा, हम्म। तो उसमें आपको बताया हम्म। जाएगा कि क्रिएट डिस्प्ले के लिए कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर। ये जस्ट ओके। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑथराइजेशन रोल कैसे काम करता है। सो एवरी सीडीएस व्यू हैविंग सम ऑथराइजेशन, राइट? और वो कैसे हम्म। डिफाइन है, यहाँ पे वही दिखा रहा हूँ मैं। कंट्रोल शिफ्ट ए, राइट? ये हो गया सी अंडर स्कोर सेल्स, सेल्स ऑर्डर, सेल्स क्या था, ओपन सेल्स ऑर्डर, राइट? कंट्रोल शिफ्ट ए, ये अंडर स्कोर ओपन सेल्स ऑर्डर। अब ये है एक्सेस कंट्रोल हो गया, और मेटा डाटा एक्सटेंशन। मेटा डाटा लेयर, यूआई प्रेजेंटेशन वेरिएंट, ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे तो सही रहेगा, बस बता दे रहा हूँ। एनोट व्यू, एनोटेड व्यू, राइट? विथ, इसमें जो हम लोग UI5 डिजाइन करते हैं, राइट, UI5, तो उसमें कुछ कंजम्पशन व्यू में पोजीशन देना, इम्पोर्टेंस क्या है इसका, कस्टमर नंबर, सेल्स ऑर्डर, रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट, नेट अमाउंट सेल्स, ये सब चीज 3-4 फील्ड है, इसको एक्सटेंड करते हुए ये एक्सटेंड किया गया UI5 एनोटेशन। ये है तो UI5 का पार्ट है, एक्सटेंशन करके किया, एक्सटेंशन करके कुछ भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये है, तो मेरे DCL का ये पार्ट है, तो अभी मैं बताता हूँ DCL का। तो मेरा क्या था, एक्सेस कंट्रोल, राइट? दिस इज एक्सेस कंडीशन गिवन,
और ये पूरा ग्रांड से वेयर से till it is called access rule. Access rule can be defined access condition but also provide full access. तो कंडीशन बेस भी हो सकता है या तो आप फुल एक्सेस दे सकते हो, और यहाँ लिटरल वैल्यू यूज कर सकते हो ऑन क्लासिकल ऑथराइजेशन ऑफ करेंट यूजर, राइट। यही है आपका पीएफसीजी और एस्पेक्ट पीएफसीजी और तो स्टैंडर्ड सीडीएसबी में दिखाया ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट फील्ड नेम एक्टिविटी। सो यही है ऑन क्लासिकल ऑथराइजेशन करंट यूजर। ये सब है तरीका देने के लिए एक्सेस कंडीशन। कंडीशन में कैसे किया जाए, तीन तरीका है। सो ये और बेस्ड ऑन एक्सेस ऑथराइजेशन चेक में रहता है, इफ यू आर गिविंग नॉट रिक्वायर्ड देन यू not needed. And how you can disable the following ways: not allowed. If you provide not allowed, then it will disable the access control of your current CDS view with privilege access in above SQL query. In SAP SE38, you will provide this keywords, then it will disable the access and you can able to get all the data, or you can provide full access. So yesterday till this I have covered. Access control will not apply when the CDS entity is used. Means yeah, one CDS is another CDS. If you will use, then it will not apply. So these terms and condition you have to remember. That's why I'm repeating this. When CDS entities are accessed using SQL, above program cannot distinguish whether the data is not real because it does not exist or because they are not allowed CDS access control. Okay. When you are going to use SQL view name, ये है ना ऊपर वाला, जब हम लोग CDS व्यू क्रिएट करते हैं, जब हम लोग उसको यूज करते हैं SAP 30 प्रोग्राम में, तो उसको पता नहीं चलता है कि क्या यूज कर रहे हैं। मतलब वो बस सोचता है कि व्यू यूज कर रहे हैं, SQL व्यूज यूज कर रहे हैं, उसको नहीं मालूम होता है CDS यूज कर रहे हैं कुछ क्या यूज कर रहे हैं। तो वो एक्सेस काम नहीं करता है, CDS व्यू देंगे तभी काम करेगा। सो ये हो गया। नाउ let's okay, I will do coding. Let me go through some more. एक्सेस रूल बता दिया हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस रूल ये भी बोला हूँ। एक्सेस कंडीशनल है और फुल एक्सेस है, इनहेरिटेड एक्सेस इनहेरिट है। हाउ टू क्रिएट ऑथराइजेशन ये भी मैं बताऊंगा। ऐसे क्रिएशन ऑफ रोल ये भी एक्सेस ही नहीं है तो कैसे बताऊंगा, ये भी एक बात है। हाँ बट ये असाइन तो अपन ने देख लिया फिर भी पीएफसीजी वाला तो। हाँ वो आपके सिस्टम में मैं बता दूंगा ये वाला पार्ट, ठीक है ना। हम्म। तो ये एक्चुअली बेसिस का पार्ट रहता है, लेकिन मुझे पता है, बता सकता। फंक्शनल पार्ट हो गया ना ये तो। फंक्शनल बेसिस, सिक्योरिटी बेसिस, ऐसे हम्म। पीछे का काम पर रहता है ये सब चीज। हाँ लेकिन ये तो आपको मतलब मेरे में भी एक्सेस नहीं है तो हम भी नहीं कर सकते पीएफसीजी वाला तो। कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, पता रहने से क्या होता है ना, आपको हम्म। क्लियर रहता है कि कैसे काम करता है बैकएंड। ओके। ओके। कंडीशनल रूल है, ग्रांट रूल है, इनहेरिटेड रूल है। तीन टाइप का रूल है। कंडीशनल रूल वेयर कंडीशन में देते हैं, ग्रांड में देयर इज नो कंडीशन, इनहेरिटेड अभी मैं कंजम्पशन रूल में दिखाया आपको, इनहेरिट किया हुआ है, राइट, इंटरफेस CDS व्यू से। सो दिस एक्सेस the access rule defined by different CDS role, जो थोड़ा डिजाइन पार्ट में आ जाता है, और कंडीशन एंड कंडीशन।
हेलो। यस हेलो। ये पीडीएफ आपने शेयर कर रखा है ना मुझे? पीडीएफ तो शेयर किया हूँ, लेकिन मैं तो रोज अपडेट करता हूँ ना इसको, तो ओके ये सब ओके। तो नहीं होगा ना उसमें। आप अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। मैं शेयर कर दूंगा अभी आज पीडीएफ हम्म। एक बार। आज मैं ओके। वो ड्राइव भी अपडेट कर दूंगा, उसमें रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब। उसमें रहता है ना, तो मैं क्या रहा तो वहीं जाके अब करूँ। राइट। हाँ नहीं, आज मैं कर बार दूंगा, बार आपको बार एक्सेस बार दे सेंड दूंगा मैं। करना पड़ता है ना, तो जब डिमांड, हम्म। जैसे डिमांड आया आपसे, मैंने शेयर, तो मैं शेयर कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। राइट। और जब आप डाल दोगे, शेयर ड्राइव शेयर कर दोगे, दैट इज कॉल्ड इनर जॉइन। So like that it works. Okay, now I will go for practical session. Uh, so how you will create the roles? Suppose shall I use any कोई सिंपल वाला ले, क्योंकि अब ये सब तो थोड़ा भारी भरकम है. Okay, let me create one CDS view. CDS view. So first, what data definition? DDL. Okay. So that DDL, data definition language, CDS. Okay. Now, uh, sample underscore DDL. Sales order. Let me create a new transport request. For sales order. अरे यार, template नहीं आना. Okay, let's copy from. Let me take this 07. तो क्लोज करो. इसका क्लोज, इसका क्लोज. 758. So serious. And here I ask well, ADS underscore well underscore 07. Okay, sales order display. Yes, remove it. Yes,
let's see. नीचे भी एक हेड है। AGGAT या DAT. Let's run some more skills. Yeah, NETWR. This is my simple view. Group by clause. It's the same. Okay, group by clause because I'm giving count, right? So ग्रुप बाय में अभी सब डिफाइन करना पड़ेगा ना, ये सारे कॉलम। VBLN रह गया। BBEL. आपने नाम 02 दे रखा है, 0 SMAPLE। DDL. SMAPLE कर दिया था आपने। Yes, where अरे यार अब यहाँ पे आपका आएगा रेफरेंस फील्ड तो लेना है भाई। तो है रेफरेंस फील्ड। आ जाओ। ठीक है और को देख लेते हैं। Because 7 ले ले तो ओके ठीक है। नाउ एक्टिवेट इट एंड run it. Yeah, that's good. Okay, now I will select this and I will create DCL. Yeah, new access control. New access control. So DCL serious
simple keyboard. Access or sales order. Now, which sample? See here. Here, I will explain you. Define role with simple condition. Simple condition you can give, right? And or condition also. And if you are selecting PFCG, so PFCG authorization object based on your authorization object is you can as give your where condition, inherit condition, where inherit condition for the entities I have shown you that inherited from the another CDS view. One CDS view having some authorization, so you can inherit that condition in your another CDS view. Generic aspect, this one I also not used with generic aspect. Some aspect you can give. I don't know about this also much. When some value is will be there, that should be bypass. That should not display. Some value like if you are displaying some data and some data is very important, right? Which don't want to display. So bypass that data by using this role with unrestricted exhibition also. I don't know. Not used that much. Only this up to this only I have used generally. So simple condition I will select. मतलब वही एक दो ही यूज आते होंगे ना, बाकी सब थोड़ी। बाकी सब कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में होता होगा। आप ज्यादातर मैक्सिमम क्या होता है ना, हम लोग कस्टम ही यूज स्टैंडर्ड सीरीज भी यूज करते हैं और स्टैंडर्ड सीरीज व्यू वैसे कोई सिनेरियो रहा तो हम लोग कस्टम सीरीज व्यू क्रिएट थोड़ी करके मोस्टली स्टैंडर्ड काम स्टैंडर्ड सीडीएस यूज से हो जाता है क्या? हो जाते हैं मैक्सिमम। और अगर मान लीजिए आपको कस्टम सीरीज व्यू भी क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं। अभी मान लीजिए MB52 है, एक टी कोड है हमारा, राइट? उसका जो आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं है सीपी में, वो क्लासिकल रिपोर्ट जैसा आता है। तो उसके लिए एक बार रिक्वायरमेंट आया था कि सीडीएस व्यू के थ्रू, अब सीडीएस व्यू उसके लिए मिल नहीं रहा था, मतलब कुछ कुछ के लिए नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, टेबल से कुछ डाटा उठा के सीडीएस व्यू से कुछ डाटा उठा के कस्टम सीडीएस व्यू क्रिएट किए थे बेसिक सीडीएस पे। तो वो डिपेंड ओके। करता है। अब मान लीजिए सीडीएस व्यू में 2000 फील्ड्स है, आपको 5-10 ही फील्ड्स की जरूरत है, तो आप क्यों स्टैंडर्ड वाला तो यूज करते कस्टम। हो? अच्छा, कस्टम स्टैंडर्ड यूजर फिर। डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। मतलब परफॉर्मेंस भी आपको देखना होता है पहला चीज। दूसरा चीज हम्म। एक्सिस के थ्रू भी आपको सोचना होता है कि इसका एक्सिस अगर ये है वो है तो हम लोग कैसे एक्सिस देंगे। अगर एक्सिस में कुछ ज्यादा हम्म। इशू आ रहा है, मान लीजिए ज्यादा एक्सेस नहीं देना है, राइट? तो हम लोग क्या हम्म। करेंगे, कस्टम सीडीएस व्यू बनाएंगे स्टैंडर्ड यूज करके, और उसका हम लोग एक हम्म। एक्सेस क्रिएट करके दे देंगे कि ये लो एक्सेस अब इसके लिए हो गया। तो सिनेरियो के अच्छा। पड़े एक्सेस की वजह से भी कभी कभी हम लोग को अलग डिफरेंट डिफरेंट सीडीएस व्यू क्रिएट करना पड़ जाता है। मतलब मोस्टली ज्यादा बिल्ड करना नहीं पड़ता, हो जाता है। हाँ हो जाता है, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मैं कोई कोई सिनेरियो में क्या होता है, स्टैंडर्ड सीडीएस व्यू जो होता है, राइट? हम्म। एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। हाँ हेलो, सब बढ़िया? हाँ 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 बोलिए।
अविनाश तिवारी। चल मैं देख के बताता हूँ ना, अभी थोड़ा कॉल में हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके थैंक यू। यस, सॉरी। सो ओके, so in standard, on top of standards views, if you will create multiple roles, right? That one also, some places they will not recommend actually. So what they will do, they will copy the standard one and create custom one, and they will create different role on top of that custom uh, CDS window. So like that, only it will work. Okay, let me create one a role for this, and this is our CDS view. Okay, and this is our role. Now I want to give some access. Roles, okay, so what each access will give? Let me run this again. And database preview. This is Spark USD R control shift A APAK. Okay, let me take BPTYT. BPTYT here on mode field. BPTYT. Okay, and I will remove this pair condition unit. Here I will take BPTYT. Okay, activate it. And see here one more features is there, F4 help, right? See, F4 help, but not there, right? This is DCL, ETL, ETL. Okay. Okay. Now it is getting, I am getting record for C and K and PG. PG, C, K, and K, I, H, many are there, right? So now in DCL, what I will do, let me uh, filter
I want to copy this. Okay. PPTYP. PPTYP. Choose any number. C. Multi C. Now run it. Activate it. Okay. I generated. Now again I will refresh this. See, only C data I'm getting, correct? Hello? Yes, yes. Now you can able to see only C data I'm getting because I have given the authorization. Only C Hmm. data, right? Now I'm getting only C data. So like that it works. Uh, Let me go another example. So here is one example. Okay. This is okay. Authorization check. What I have given? Authorization. Yes. Check. Suppose I will not just trying, not allowed. Okay. Let's see it's bypassing or not. See, now it is bypassed, right? Hello? Yes, yes. Now it is bypassed. It's, okay. So again, they are not allowed. Check. Okay, they are using not allowed. So here giving error message, but for me, not giving any error message because this is defined view only, right? That's why older version. In new version, we are not getting. They have changed something, but in older version, define view, not entities, only view. In that, if you will give not allowed and you have created this, right, then it will give some error. But it should not be give any error message. I will create. Okay, now coming to our program, SAP program, right? So let me go to SAP program, build F8, build F8. So SE38 program. So here jets here underscore CDS underscore consume underscore CL
check. Demo for access. View. Suppose I'm going to use CAPAP. I'm storing in package. Yeah. Then now select star one. This is our entity name. Into table data ID final. Now to our program. So final. So this is the output. We are getting C, C, K, C, K, C, right? So why we are getting this is check. Okay. And then also this one C. Activate it. Now we are getting CC only, right? You got right. So in program also, if we are using CDS view and we have given some authorization, so it is displaying only for that particular document for which we have created the role. Now I want to restrict. You have seen we have restricted this access control by using not required, not allowed, right? Now in program, how I will do? In program, we have give with privilege access, right? This is the syntax with privilege access. If I will give with privilege access, right? Now I will again run it. See here, K, B, G, I,
right? The DCL part is bypassed. Access part is bypassed. So like that, you can bypass your DCL for the CDS view. And now, what is this? Okay, now one more thing. In program, you have seen how you bypass, right? There are three ways. First way, second way, three way. Now I will create CDS view on top of this, right? Let me pass some like um, customer, customer access underscore type. Okay. uh, as as currency here as amount. Okay, what is the error? So keep this currency here. Now error will go. Okay, now it will run it. The access control 01 has error. Open it for more information. Access control management. Just suppose I'm giving false address. False. Must have. By default, it is true only, and it should be true. Okay, let me check. Okay, sales type I have given, right? So now here I have to give sales type. That's the error here. Now warning gone. Now I will execute it. I will get only C. Right now I want to bypass by using consuming this CDS view in another CDS view. So like this. Uh, new data definition service define. Okay, new data definition. Yeah, here I'm getting consume consume CDS view to another check access.
use annotation. So I will use this one. Okay, 47, 40 character till I can give. Consume CDS view. View. Yeah, now okay. What is the error? Okay, let me copy this semantic view and I will provide here. Okay, activate it. Hello. Hello. Yeah, now you are getting right. समझ में आ रहा है? See here. C के now access control is bypassed. इसमें जो access दिया हुआ था राइट ओनली C आएगा तो वो बाईपास करके बाकी आ रहा है जब हम कंज्यूम करते हैं और मैं अपना क्या बोलते हैं रोल दे सकता हूँ इस पे करेक्ट राइट क्लिक करके अभी कंज्यूम में तो ऐसा हम लोग सीडीएस स्टैंडर्ड सीडीएस व्यू को हम लोग कंज्यूम करेंगे और उस पे हम लोग तब एक्सेस कंट्रोल उसका हट जाएगा स्टैंडर्ड का करेक्ट तो हम लोग उसके ऊपर हम लोग अपना रोल डिफाइन कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट अभी समझ में आया राइट यस यस हाँ ये है एग्जाम्पल प्रॉपर एग्जाम्पल तो ऐसे कर सकते हैं नाउ आई एम गोइंग टू हियर ओके ग्रैंड रूल तो फुल एक्सेस कंडीशन हटा देंगे तो मिल जाएगा फुल एक्सेस ये कंडीशनल भी हो गया इनहेरिटेड नहीं हुआ है राइट इनहेरिट पीएफसीजी वाला भी नहीं हुआ है पीएफसीजी वाला इधर कोई एग्जाम्पल नहीं बचा ओके बस अभी यहाँ तक यही हुआ है ओके पहले तो रोल क्रिएट करना होगा तभी दिखा सकते हैं रोल तो है नहीं मेरे पास तो स्टैंडर्ड का यूज करेंगे तो ठीक है access grant to grant select on without adding where condition partner and customer can use full access rule to override rules supplied by SAP. So, okay. There is a single CDS entity can be specified in multiple access rule for the CDS view. मैंने एक access rule create किया, दूसरा access rule create किया, same CDS view के लिए. तो ये दोनों क्या करेगा और कंडीशन यूज करेगा हाँ ये दिखा सकता हूँ अभी जैसे मैं अब बाकी को कंज्यूम कहाँ गया क्लोज करो क्लोज करो और ये मैंने ये मेरा सीडीएस बेस सीडीएस व्यू था राइट बेस सीडीएस व्यू का मैंने एक्सेस कंट्रोल क्रिएट किया और सेल्स टाइप सी दे दिया राइट सो अभी इसका हम लोग देखेंगे डाटा प्रीव्यू तो हमको सी दिख रहा है ओके अब हम ए भी लाना चाह रहे हैं दिखाने के लिए राइट
तो यहाँ पे तो या तो आप डाल दीजिए ऐसा, और जैसे ये मैं एक्सेस कंट्रोल दे दिया, राइट। तो इसमें ए भी आ रहा है, ये है, नोट कर दो भाई। तो देखिए ए है, ए एंड सी है, दोनों आ रहा है, करेक्ट। तो ये आपको और कंडीशन काम करेगा। और यहाँ पे आप एंड डाल देंगे तो कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो हियर आई विल बी प्रेसिंग, ब्लैंक आएगा, कुछ नहीं आएगा। दोनों कंडीशन कैसे सक्सेस होगा? या तो ए रहेगा या तो सी रहेगा, दोनों तो रह नहीं पाएगा, तो आपको ब्लैंक डिस्प्ले होगा, कंडीशन फेल हो जाएंगे। हाँ फिर क्या रखना, और कंडीशन। सपोज मान लीजिए कभी कभी रिक्वायरमेंट आता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड रोल क्रिएट हुआ है, करेक्ट। मेरा एक व्यू है, व्यू के ऊपर एक रोल ऑलरेडी है जो बराबर काम कर रहा है, और उसके ऊपर मुझे ऐड करना है मेरा रोल, और उसमें कुछ कंडीशंस है। हम स्टैंडर्ड में तो जाके चेंज करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हम अपना एक क्रिएट करेंगे, राइट। जैसे JTCL एक्सेस सीरियस, मान लीजिए एक्सटर्नल एक्सेस सीरियस, external, we can say additional access on CDS view. Yeah, blank भैया क्या कहें। तो इधर पे क्या क्रिएट हुआ भाई? मुझे तो एक्सेस क्रिएट करना था, मैं व्यू क्रिएट कर दिया, राइट। ओके, चलेगा। कंजम्पशन भी क्रिएट कर दिया, ये तो है। डिटेल क्रिएट कर दिया हूँ, 1 सेकेंड। ये है, इसके ऊपर क्रिएट करना है न्यू एक्सेस कंट्रोल, ZDCL 02 additional access areas, या सिंपल कंडीशन। PFCG भी डाल सकते हैं, लेकिन PFCG मेरे पास रोल अभी है नहीं, ऑब्जेक्ट भी है नहीं। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया और मैं जो पुराना वाला था इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इसका हम दे देते हैं जी, जी।
तो क्या हो गया, ACG 3 आना चाहिए। जी आया। जी। तो एक्टिवेट करो पहले। C आया, A आया। ETL SM। एक्सेस कंट्रोल इधर है। सो फर्स्ट वन इज ANC and the, yeah, CGA। हम्म। अच्छा, मैक्सिमम 100 रोज है क्या? तो 999 दे दो। तो सॉर्ट कर दो। ये A आया, C आया। हम्म। ये G आया। करेक्ट। यस। ACG तीनों आते हैं। दोनों को एक्टिवेट करना होता है प्रॉपर तरीके से। अगर नहीं आ रहा है तो प्रॉपर तरीके से तीनों को एक्टिवेट करना होगा, तब जाके। सो ये हो गया आपका मल्टीपल्स एक्सेस कंट्रोल करके क्रिएट कर सकते हैं। और वो काम हम्म। करेगा और कंडीशन, राइट, नॉट एंड कंडीशन। अगर एंड कंडीशन करवाना है आप, तो उसके लिए भी सिंटैक्स है। जैसे ये वाला रो, एक एक एक्सेस रूल, दो एक्सेस रूल, तीन एक्सेस, एक एक्सेस रूल, दो एक्सेस रूल। ये सीरीज वन, ये क्रॉस है। मल्टीपल सीरीज रूल कैन कंटेन एक्सेस रूल फॉर सिंगल एंटिटीज। मल्टीपल रोल्स रह सकते हैं फॉर सिंगल एंटिटी के लिए। हाँ, ये है कॉम्बिनेशन मोड, राइट, कॉम्बिनेशन मोड। ये हमको और कंडीशन काम कर रहा है। अब हम डालते हैं कम, डाल देते हैं कॉम्बिनेशन। सॉरी, सेलेक्ट होने इसमें जाएगा। यहाँ डाल कॉम्बिनेशन एंड
और या कॉम्बिनेशन मोड एंड, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें तो कुछ नहीं आएगा। क्यों आएगा कि एंड कंडीशन हो जाएगा ना, दोनों सपोर्ट नहीं करेगा। इसके लिए टेस्ट केस मुझे अलग देखना पड़ेगा। पहले क्या आ रहा, ए सी, राइट। कंडीशन लगा दी ना आपने। मोड एंड डालेंगे तो मैं क्या करता हूँ, डाटा देखते हैं पहले। जी, जी के लिए मेरा क्या है, सेल्स ऑर्डर बेस है, 001, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पी वी एल एन, ये तो नहीं है, सेल्स है शायद, सेल्स इक्वल टू कॉलम, जी वाला मैं ले लेता लेकिन हूँ। दोनों एक ही है, हाँ, दोनों का आउटपुट तो एक ही आएगा ना। नहीं आएगा, एक नहीं आएगा। जैसे अभी मान लीजिए दोनों का ये जी है, करेक्ट। उसका जी ही है ना। हाँ, आउटपुट तो एक आएगा, तो मैं ये एक हम्म सिंगल इसके साथ चाहता हूँ। तो सिंगल लोड इसके साथ एंड कंडीशन तो काम नहीं करेगा। मान लो इसको मैं ई डाल दिया, ये जी रहेगा और ये सेल्स ऑर्डर रहेगा। अब आएगा काम, जैसे एग्जांपल में ये जी है, राइट, जी तो है। इन दोनों में एंड कंडीशन लग रही है क्या? जी तो बहुत सारा सेल्स ऑर्डर रहेगा, राइट। हम्म बट अब नंबर तो एंड एक ही रहेगा। हाँ, नंबर मैंने एक डाल दिया, एक में नंबर डाल दिया, एक में जी डाल दिया। अब रन करते हैं, तो सिंगल रिकॉर्ड आया। अच्छा, एंड कंडीशन काम करता है, कंबाइन दोनों को कंबाइन करके रोड क्रिएट होता है। तो मान लीजिए आपका कोई सीरियस व्यू है, उसमें आप अलग से पहले से डिफाइन किया हुआ है, आप अलग से रोल क्रिएट करके आप अपना एंड कंडीशन भी डाल सकते हो। ओके। ये हुआ। और एक और आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है combination mode and an or optional used for multiple access rule for the same serious entity, right? हम्म, यहाँ रीडिफाइंड है, रीडिफिनेशन, सीरियस डिजिटल एक्सेस रूल, कंडीशनल रूल। यहाँ पे आपको पीएफसीजी और ये दो एक्सेस कंट्रोल दिया हुआ है, ठीक है, दो एक्सेस कंट्रोल दिया हुआ है। अब इधर में क्या किया गया है,
इसको रीडिफाइन कर दिया, रीडिफाइन करके ये दे दिया, the addition can be used for maximum one axis rule for a CDS entity. मतलब the addition also disable the existing full axis rule for the CDS entity. Sorry. The addition can be used for the maximum of one axis rule. इसमें रीडिफाइन ना एक ही बार कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते। मतलब एक बार डिफाइन रीडिफाइन किया, अभी मान लो आप सोच रहे हो कि इसको दोबारा मैं रीडिफाइन करूँ, राइट, तो नहीं होगा, एक ही बार रीडिफाइन। वन इनहेरिटेड एक्सिस रोल एक ही बार कर सकते हो। द एक्जिस्टिंग रोल पेरेंट रोल कैन कंटेन सिंगल एक्सिस रोल। लैंग्वेज बता दिया, इसका मैं प्रैक्टिकल कल बताता हूँ ना, पीएफसीजी का। और इनहेरिटेड का भी एक इनहेरिट वाला भी बताता हूँ। ठीक है ना, चलेगा। थोड़ा आज का अच्छा रहा। हाँ आज का अच्छा सेशन, समझ आ गया पूरा, इंटरेस्ट आया। अब ये पूरा जब जान जाओगे ना, छोटा 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 करके, जब आप स्टैंडर्ड देखोगे तो पूरा आपको इजी लगेगा। ओके समझ रहे हो ना, अभी जब स्टैंडर्ड व्यू खोलो इतना बड़ा है, ये है क्या नहीं है, वो पार्ट पार्ट वाइज जब आप तोड़ तोड़ के देखोगे उसको अच्छे से क्या क्या है, तब देखने में इजी लगेगा। ठीक है, ठीक एनी क्वेश्चन अभी नहीं है? नहीं क्वेश्चन रखना।